SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you are happy and healthy at your home. This is your mentor Nisha Gola, and today we will start our chapter number 7, and the name of the chapter is fractions. Let's start our chapter. So here, first of all, what is fraction? So fraction is that when we divide a object or something in equal parts, that is called fraction. Now, let's revise some questions here. The first one is, in each of the following, write the fraction representing the shaded portion. So here are some figures are given and we have to write the fraction of the given figure. तो हमें ये जो फिगर दी हुई है उसका हमें क्या निकालना है बच्चों, फ्रैक्शन. सो जो भी टोटल पार्ट्स होते हैं वो हम फ्रैक्शन को हम लिखते हैं p बाय q की फॉर्म में. ठीक है, और ये जो ऊपर वाला p होगा ये होगा हमारा न्यूमरेटर और नीचे अपॉन के नीचे जो आता है जैसे q है वो हो गया हमारा डेनोमिनेटर. Okay, so how do we write it? We will write, first we will count all the parts of the given figure. So there are 1, 2, 3 and 4 parts. So 4 written as a denominator. Then we have to count shaded portion. So here is only one part that is shaded. So shaded portion will become numerator. It means the fraction of this figure is 1:4. 1 upon 4 we can say. Here total parts are 1, 2, 3. So we have to write here 3 and the shaded portion is 1. So we will write here 1. Our fraction will be 1/3. In that also there are two parts and one part is shaded. So it will become 1/2 or we can say half. Here 1, 2 and 3. 3 parts are given and 1 shaded part. So fraction will become 1/3. Here 1, 2 and 3. 3 parts are given and 1 part is shaded. Okay. So our fraction will become 1/3. Just like here in question number 2, in each of the following figures shaded as mentioned. In question number 1 shaded are given and we have to make fraction. But in question number 2 here fraction are given and we have to shaded the figure. तो हमें क्या करना है, फिगर को शेड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन फ्रैक्शन. सो हेयर आर 4 parts. Yes, 1, 2, 3 and 4. And what is shaded part? 1. It means we have to shade one part. Okay, so now it will become 1/4. Just like in this 1/2 there are 2 parts and 1 is shaded part. So we will shade one part. Okay, now move to the next. Here is our 3 parts total. Yes, 1, 2 and 3 and we have to shade one part. So we can shade any part of this. Similarly in this 4 parts are given and 1 have to shaded. Okay, now 1/3. So 3 parts are there and then one part we have to shade. Now we shaded the figure according to the given fraction. I hope it is clear to you. Now move to the next question. Using dotted line, divide each collection into suitable number of parts and fill in the blanks. So here we have to divide it in equal parts. Just like that, here I collected 2, 2 and 2. So 1/3 of 6, there are 6 leaves and we have divided it into 3 parts. Okay, and in each part we get how much leaf? 2 leaves. So here will become 2 leaves, or we can say 1/3 of means multiplication and 6 is there. 3 ones are 3, 3 2s are 6, 2 is coming. So our answer is 2. Okay, just like that you have to solve this one also.
ओके, नेक्स्ट राइट द फ्रैक्शन होल्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शन बनाना है। जैसे अभी हमें फर्स्ट दिया है न्यूमरेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 7 एंड आई टोल्ड यू व्हेन वी राइट अ फ्रैक्शन सो अपर साइड विल बी न्यूमरेटर एंड नीचे आएगा हमारा डिनोमिनेटर। इट मीन्स न्यूमरेटर इज गिवन 4 and denominator is given 7, so it will become 4 upon 7, so it is our fraction. Here denominator is 6 and numerator is 1, so how we'll write it? 1 upon 6, so 6 is our denominator and 1 is our numerator. Okay, now draw a collection of any 10 similar objects of your choice and shade half in red. So we have to make 10 any object, okay, whatever you want to draw, okay, and then shaded half of the portion. So what will be half of the 10 is 5. So you will do by yourself this question. Now we will understand what is understanding fraction. So when a whole is divided into equal parts, एज आई टोल यू, हम क्या करते हैं जब किसी होल को, पूरी शेप को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन अ पार्ट और पार्ट ऑफ अ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तो हम पार्ट ले रहे हैं, होल का जो भी पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रैक्शन। जस्ट लाइक दैट 1/2 पार्ट्स रेफर टू, अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने देखा था ये जो शेडेड पार्ट है वो हम ऊपर लिखते हैं एंड नीचे total number of equal parts, so it is denominator, that is total number. Then we have already discussed it is numerator and it is denominator. Okay, so now understand one by one fraction. What is half? Half is written as 1/2. One whole is divided into two equal parts. One whole को अगर हम, here is given, एक हमारे पास होल फिगर है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, तो टू पार्ट्स हो गए हमारे डिनोमिनेटर और वन क्या है, शेडेड पार्ट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1, दैट विल बिकम 1/2, और वी कैन से दैट हाफ, टू हाफ्स मेक अ होल, सो व्हेन वी ऐड टू हाफ्स सो इट मेक अ होल। हियर हाफ पोर्शन इज दिस एंड हाफ पोर्शन इज दिस, अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा होल। ओके, next is 1/3. So what is 1/3? 1/3 is written as 1/3. One whole is divided in 3 equal parts. So अब हम क्या करेंगे, एक होल पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इसमें से 1 पार्ट शेड कर देते हैं, तो our fraction will become 1/3. So 3/1/3 make a whole. जब हम 3/1/3 को एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बनाएंगे, होल। Just here given the example, 1/3 plus 1/3 and 1/3 equals to 1. So it makes whole. जब ये तीन पार्ट्स हैं 1 2 3, इन तीनों को हमने मिला दिया तो क्या बन गया, हमारा एक होल बन गया पूरा। नेक्स्ट क्वार्टर। सो व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर इज 1/4। क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है कि 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट हमने लिया है। वन होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, की जो हमारे पास होल है, फिगर है, ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, एंड उसमें से 1 पार्ट इज शेडेड, सो 4 1/4 मेक अ होल। तो जब हम 1/4 को 4 बार 4 टाइम्स उसको मिला देते हैं तो क्या होगा, एक होल बन जाएगा। जैसे ये 1 2 3 और 4, इन 4 पार्ट्स को जब हम मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक होल। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1, तो ये होल बना रहा। हियर अगर हम 2 1/4 को मिलाते हैं तो ये बन जाएगा 2/4 1 1, we will written like this, 1/4 1/4, so 1 plus 1 and upon में 4, so it will become 2/4, that is 2 1 is 2, 2 2 is 4, it will become 1/2. So we can say that when we add 2 1/4 it will become half of the figure. Okay, so here 4 is given as denominator and we have 3 parts shaded, 1 2 and 3, so it will become 3/4. Okay, now we will start our exercise.
exercise 7.1. Now we will solve our question number 1, that is how many of the following make a whole shape. So here some fractions are given and we have to know how many of this fraction if we are taking so it make a whole. If we solve first one, it is half or half. We can write 1/2 like this, and we know that if we want to make a whole shape, so how many 1/2 we want. So 1/2 and 1/2, it will become 2/2, that is 1. It means अगर हम दो हाफ्स लेते हैं 1/2 दो बार लेते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा होल बन जाएगा. तो इसको कितनी बार चाहिएगा हमें, 2 times. Here is also if we are talking about 1/5, so 1/5, 1 plus 5, 1 plus 5, 5 times we add, so it will become 1, 2, 3, 4, 5 and upon 5, 5 1 the 5, it will become whole. Means if we want 1/5 to make a whole, so we want 5 1/5. ओके, तो हमें 5 बार उसको ऐड करना पड़ेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, 1/5 को एक होल बना सकते हैं. तो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू सोल्व these rest of parts also. Okay, now move to the next question, that is match using different colors. So we have to match these. How? It is 7/10. It means we already talking about that it is a whole parts of the given figure and these are the taken parts or shaded part, we can say that. Okay, so what is 7/10? So 7 out of 10 equal parts. कि 10 equal parts है, उसमें से जब हम 7 take out कर लेते हैं या उसको shade करते हैं, तो that is 7 out of 10 and this fraction will become 7/10. So we will match here also. And we also write like this, 7/10 will be 7/10. ओके, तो जब भी हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं, जैसे मैं लिखा 2/3, तो जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमारा कार्डिनल नंबर में लिखा जाएगा, दैट इज 2, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा ऑर्डिनल नंबर में, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से. तो ये क्या हो जाएगा, 2/3. ओके, तो ऐसे ही फ्रैक्शन लिखे हुए हैं बच्चों. ठीक है, जैसे अब मुझे लिखना है 1/4, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 1 कार्डिनल नंबर ऐसे ही लिखेंगे और 4 का हो जाएगा फोर्थ, तो इट विल बिकम 1/4. ओके, नेक्स्ट 1/4, it means 1 out of 4 equal parts. Here is this, we have to match this. Okay, now what we will call 1/4, it is 1/4. So where is 1/4, or we can say 1/4 also. Quarter means also 4 parts, so here we will match it. Okay, so just like that you have to match all the given parts also. Okay, next we will move to the fill in the numerator to make a whole. We have to make a whole, and so what will be the numerator of the given fraction. So हमें पता है कि जब भी हमें whole बनाना, it means numerator and denominator same होगा. अब 2/2 लिखा, जब ये 2 1 2 जब बनेगा हमारा 1. So just like that we will solve 5. Here is also 5, 5 1 5, so it will become whole. 7/7, 7 1 7, it will become whole, one part means. Okay, so just like that you will do these questions also. Now we will move to the next topic, that is equivalent fraction. So what is equivalent fraction? When we equal two fractions. So when two fractions are equal, we will call them equivalent fraction. Not two, more than 2 also. Okay, so here as we write earlier, just like that, here are two parts, that is our denominator, and one part is shaded, so it will become 1/2. Here 1 2 3 4 5 6 parts are given and 3 parts are shaded, so it will become 3/6. Okay, now here 4 parts are given and 2 parts are shaded, so it will become 2/4, or we can say 2/4. Here 8 parts are given and 4 are shaded. So we have to find out what. So these are equal. 1/2 equals to 2/4
equals to 3 by 6 equals to 4 by 8. It means we can say that कि ये सारे जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इक्वल है. इक्वल कैसे होंगे, ये 1 by 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर दोबारा 1 by 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 by 2 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 6. तो ये सारे क्या आ रहे हैं, 1 by 2. इट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. और अकॉर्डिंग टू हम अगर फिगर देखें तो इसमें 2 पार्ट्स है, उसमें से एक पार्ट हाफ पार्ट लिया है. यहाँ पर भी 6 पार्ट्स है तो हमने 3 पार्ट्स ले लिए, इट मीन्स हाफ पार्ट लिए हैं. यहाँ पे 4 है तो हमने 2 ले लिए, 2 पार्ट्स हाफ हो गए पूरे के. और यहाँ 8 पार्ट्स है तो हमने ये 4 पार्ट ले लिए, वो हाफ हो गए. ठीक है बच्चों. The shaded portion shows the same part of the whole strip. तो ये जो होल स्ट्रिप बनी हुई है हमारी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाफ को शो कर रहा है, ये भी हाफ को, बस पार्ट्स अलग अलग है. ठीक है. तो ये क्या हमें दिखा रहे हैं, होल स्ट्रिप के बारे में दिखा रहे हैं कि वो सेम पार्ट्स हमने उसके लिए हैं. दीज आर इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शंस. तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इट मींस दे those fractions are equal are called equivalent fractions. Fractions that represent the same parts of the whole are called equivalent fraction. If we are going proper wording, so it will become fractions that represent the same parts of the whole are called equivalent fractions. So ऐसे fractions जो क्या करते हैं, किसी whole part को same parts में divide करते हैं. यहाँ पर भी same part divide है, half, ये भी half है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है. बस इसके जो हमने पार्ट्स इक्वल किए थे वो अलग अलग थे, लेकिन जो हमने इसका शेडेड पोर्शन लिया है वो इक्वल है. इट मींस दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ टू गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. और इफ वी वांट or make a fraction to a equivalent fraction, so we can multiply that given fraction by getting multiplied by same number. Here 3 upon 5 is given and we will multiply its denominator by 3 and numerator also 3. So we can multiply by any number. Here if I am doing like this, 3 by 5 multiply by 2 denominator and multiply 2 numerator also. So it will become 3 to the 6 and 5 to the 10. So it will become 6 upon 10. It means we can say that 3 by 5, 9 by 15, 6 by 10, these are all equivalent fractions. Now move to the example. Find two equal fractions of 1 by 3. So we have to find out equivalent fractions of 1 by 3. Pictorial representation of equivalent fractions. Here pictorial representation means pictures आपको दी गई है और उसकी हेल्प से आपको समझाया गया है. So here this figure has 3 parts. So we have denominator as 3 and one part is shaded. So we have numerator as 1. So it will become 1 by 3. Here we have 6 parts. So 6 is our denominator and 2 parts are shaded, 2 is our numerator. Just like that, here 9 parts are given, that is denominator, and 3 parts are shaded, that is our numerator. So from that we can learn 1 by 3 equals to 1 by 3 into 2 into 2. अब हमने क्या किया, जो हमने अभी पढ़ा था कि जो भी हमें फ्रैक्शन दिया है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो 1 by 3 दिया हुआ था, उसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को. 1 2 2 and 3 2 6. So here we multiply both numerator and denominator by 2 and we will get 2 by 6. Now next 1 by 3 is given and we will multiply it by 3, both numerator and denominator. It will become 1 3 is 3 and 3 3 is 9. So we can write here we multiply both numerator and denominator by 3. So here we can write 1 by 3, 2 by 6 and 3 by 9 are equivalent fraction. Here is pictorial representation. From that we can learn if we multiply 2 we get this one and if we multiply 3 we get this one. Okay, so here we learn that how do we find equivalent fraction. Now
how do we check it is equivalent fraction or not? So checking for equivalence. So let's learn about it. If two fractions are given to you, how will you check if they are equivalent or not? So हमें अगर दो फ्रैक्शन दे दिए जाएं और हमें ये चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? चलिए देखते हैं. Let us take a few example and see. First one is consider two equivalent fractions. So here two equivalent fractions are given, 1 by 3 and 6 by 18, and we have to find out it is equivalent or not. So cross multiply as shown. So we have to first cross multiply of both the fraction. How we cross multiply? This one numerator and other fraction of denominator. We will multiply. It will become 1 into 18 is 18. And here 3 into 6 become 18. Okay. So here is 18 and we get in both the fraction 18. It means we can say 1 into 18 equals to 18 and 6 into 3 equals to 18. We see that two products are equal, or we can say that if two products are equal of these fractions, it means these are equivalent fractions. Okay. Now solve the example number 2, that is now consider the equivalent fractions. Here we also find out it is equivalent or not. So 12 by 30 and 2 by 5. So we have to cross multiply it. Cross multiply as shown. ये 30 into 2 will become 60 and 12 into 5 will become 60 also. So here we also get 60 and 60. To 12 into 5 equals to 60 and 2 into 30 equals to 60. Again the products are equal. जो multiply करके आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो product होता है. तो इन दोनों केसेस में क्या आ रहा है? यहाँ पे भी जो टू प्रोडक्ट्स हमारे निकल के आए 18. हेयर ऑल्सो टू प्रोडक्ट्स जो आए वो 60 इक्वल आए हैं. Thus the fractions are equivalent if the cross products, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट्स निकाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो हो गए हमारे क्रॉस प्रोडक्ट्स. तो हम अगर वो इक्वल आते हैं तो उससे हम कह सकते हैं कि जो हमें फ्रैक्शन दिए हैं वो भी इक्वल है. That is the product of the numerator of one fraction and with denominator of the other are equal. कि हमने एक फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर लिया था और एक का डेनोमिनेटर. सेम हेयर, एक फ्रैक्शन का हमने डेनोमिनेटर लिया और दूसरे फ्रैक्शन का numerator. So it is cross multiply. So when we multiply like that and we will get equal numbers, so we can say that the given fraction are equivalent. Okay. And now we will move to our exercise 7.2. Let's solve our questions. So first question is fill in the equivalent fractions. We already know about what is equivalent fraction and how do we find out equivalent fractions. So here is given 1 by 3 and we have to multiply numerator also by 3 and denominator also by 3. So here 1 by 3, 1 into 3 is 3 and 3 is a 9, 3 by 9. It will become 1 by 3 and 3 by 9 equivalent fraction. Just like that you will solve these rest of the parts also. Now next question is look at the figures and write equivalent fractions. So here three parts are given, that is our denominator, and one part is shaded, that is numerator. Okay, so here both of numerator and denominator we multiply by 2. So what will we get? 1 to the 2 and 3 to the 6, or we can fill by figure also. Given figure, here are 6 parts. So here will become 6 denominator and 2 parts are shaded, that will become 2 numerator. Here also we can see 1, 2, 3, 4, 4 parts are given and shaded part is 1 and both are multiplied by 2. What will we get? Here are 8 parts. Okay, so denominator will become 8 and 2 parts are shaded, so numerator will become 2. So equivalent fraction of 1 by 4 is 2 by 8. And we multiply both of them 2, so we get 1 to the 2 and 4 to the 8. Like that we can find equivalent fraction of all the questions. Okay.
Now move to the next question, that is write the first four equivalent fractions of the following. So we have to find first four equivalent fraction, and how do we find it? So let's solve. Here 3 by 5 is given. We want to find out equivalent fractions. So we will multiply both of numerator and denominator by the same number. Here I will multiply it by 2 by 2, means by 2. So 3 to the 6 and 5 to the 10. Now we have to find out 4 equivalent fractions. So 3 by 5 को अब हम multiply कर देंगे 3 से, same number से multiply करेंगे. So what will we get? 3 3 is 9, 5 3 is 15. Again 3 by 5 को multiply करेंगे हम 4 से. So what will we get? 3 4 is 12, 5 4 is 20. And next 3 by 5 को हम multiply करेंगे 5 से. So we will get 3 5 is 15 and 5 5 is 25. Okay, 5 5 is 25. So here we can see that first four equivalent fractions of 3 by 5 are 6 by 10, 9 by 15, 12 by 20 and 15 by 25. So just like that we can find our equivalent fraction, or we can write here 4 equivalent fractions of 3 by 5 are 6 by 10, 9 by 15 and 12 by 20 and 15 by 25. So these are 4 equivalent fractions of the 3 by 5s. So just like that we have right. Okay, so here are some fraction I am given, and you have to find out 4 equivalent fraction of each fractions. Okay, so you will solve these fractions by yourself. Now move to the next question, that is check whether the following fraction are equivalent not using cross multiplication method. Here we have 3 by 8 and 12 by 32 कि ये इक्वल है कि नहीं. तो हम कैसे करेंगे? 3 by 8 और इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज नहीं करना है. 3 by 8 और ये इक्वल है किसके? 12 by 32 के. तो लेट्स वी फाइंड आउट इफ हम 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12 आए. तो 3 4 से 12. And we know that if we multiply numerator by 4, so we have to multiply denominator also by 4. So here we get 3 4 is 12 and 8 4 is 32. So equivalent fraction हम ऐसे ही निकालते हैं. कोई fraction है उसको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. अगर वो इक्वल आ जाता है इट मीन्स ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे? इक्विवेलेंट. और here we have to find out like that. So here 3 by 8 and 12 by 32 are equivalent fractions. Okay, or you can check here is mentioned are not using cross multiplication. So here we will not use cross multiplication. So rest of the parts you will do by yourself. Okay, now here some mental math questions are given. Let's solve. Think and fill in the numerator. So we have to think and then fill the numerator. Just see an example. Here 1 by 2 is given. 2 equals to 10. It means 2 5 is 10. So we will multiply numerator also by 5. That will become 1 into 5, 5. So think 2 by 5 equals to 10. So multiply by 5. Okay. So here we can do the same. 2 3 is 6. So it will be multiply by 3. And when we multiply 1 by 3, it has 3. So 1 by 2 and 3 by 6 are equivalent fractions. In this also 3 6 is 18 and 1 6 is 6. 8 4 is 32 and 5 4 is 20. Okay. So student, here is given our next topic, that is simplest form, or we can say lowest term. So how do we find it? Let's start. Reducing fractions to their simplest form or lowest terms.
So whenever some fraction is given, so जब हम किसी fraction को reduce कर देते हैं तो उससे जो हमें फॉर्म मिलती है वो हमारी होती है simplest form या फिर हम कह सकते हैं lowest term. Let's see this example. 2 by 4, here 4 parts are given and 2 are shaded. If we divided 2 by 4 by 2, both the numerator and denominator. So what we will get? 2 ones are 2 and 2 to the 4. Here we get 1 by 2. So we can say 1 by 2 is the lowest term or simplest form of 2 by 4. Here one more example is there. 6 by 9. So 9 parts are given and 6 are shaded. So it will become 6 by 9. If we divide 6 by 9, both numerator and denominator by 3. So what will we get? We get 3 to the 6 and 3 3 is 9. The fraction will become 2 by 3 means 3 parts are total parts and 2 parts are shaded. Here we can also say that 2 by 3 is the lowest term or simplest form of 6 by 9. So here 1 by 2 and 2 by 3 are fractions in their simplest form. So ये क्या है? अपने simplest form में है. So when the numerator and denominator have no common factors other than 1, the fraction is said to be its simplest form. तो हम किसी fraction को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कब कह सकते हैं? जब जो न्यूमरेटर हमें गिवन है और जो डिनोमिनेटर गिवन है फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन जो हमें गिवन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो गिवन है, अगर उनका हम फैक्टर निकाले तो उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना निकले, 1 तो सब में आएगा. ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर निकले. जैसे 3 by 4, तो 3 के फैक्टर हो गए 1 and 3. We have already learned what are factors. Or here 4, 1 and 4. So what will be common? 1. Here also 1. So we can say that in this fraction both numerator and denominator have only common factor as 1. It means 3 by 4 is the simplest form of the fractions. Okay. Now divide by common factors to get the fraction in its simplest form or lowest form. So हम क्या करते हैं? जब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था तो हमने गिवन फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया था. मींस न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ऐसे ही जब हमें इनकी लोएस्ट टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. ठीक है, किसको डिवाइड करेंगे? एक कॉमन नंबर से हम डिवाइड करेंगे या कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो उनका फैक्टर होगा. ठीक है, जो क्या करेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करेगा और उससे जो हमें आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म और वी कैन से लोएस्ट टर्म. सो कंटिन्यू डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर टिल द फ्रैक्शन इज इन इट्स लोएस्ट टर्म. तो ऐसा नहीं है बस हमें एक ही बार डिवाइड करना है, हम बार बार डिवाइड करते जाएंगे जब तक वो डिवाइड होता जाएगा, जब तक वो अपने जो हमें गिवन फ्रैक्शंस है वो क्या है? अपने लोएस्ट टर्म में नहीं आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 18 by 24 is given and we know that 6 is the factor of both the numbers. So we will divide it by 6. 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 है 18 and 6 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 6 4 से 24 and we will get 3 by 4 and 3 by 4 is the lowest term or simplest form of 18 by 24. Or we can do like that. 18 by 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं so what will we get? 9 by 12. 2 9 से 18, 12 2 is 24. Here now we know we have to continue dividing the number till we don't get simplest form. जब तक हमें simplest form नहीं मिल जाती तब तक हम क्या करेंगे? डिवाइड करते रहेंगे. So here we have 9 by 12 but their common factor is also here what? 3. So now we will divide it both the numerator and denominator by 3. So what will we get? We get 3 by 4. So here how just like that we can find out the simplest form of the numbers. Now example is given here. Identify the fractions that are in their simplest form. Okay, we have to find out their simplest form. So 1 is given 8 by 12. So how do we solve it? Factors of 8 are
1, 2, 4 and 8, and factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So here first we find out the common factors, and common factors are 1, 2 and 4. कॉमन फैक्टर आप सभी को पता है जो दोनों में आ रहे हो, दोनों नंबर्स के फैक्टर हो. सो हियर कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 and 4. So 8 by 12 is not in its simplest form because as 2 and 4 are common factors. क्योंकि इसके कॉमन फैक्टर अभी क्या आ रहे हैं, 2 और 4 भी आ रहे हैं, और हमने पढ़ा था अगर कॉमन फैक्टर 1 आएगा तब जाके हम कह सकते हैं जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है. लेकिन यहाँ 1 के अलावा दो और फ्रैक्शन आ रहे हैं 2 and 4. इट मीन्स द गिवन फ्रैक्शन इज not in simplest form. Now move to the next example, that is 8 by 11. So here we have to write first factors of 8 are 1, 2, 4 and 8, and factors of 11 are 1 and 11. So what will be the common factor here? 1 and 1. So here only common factor is 1. So we can say that 8 by 11 is in its simplest form as 1 is the only common factor because 1 is common factor here. तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है 8 by 11 फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो वो 1 आ रहा है बस. इट मीन्स वी कैन से दैट इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नाउ लेट्स डू here also. Look at the figure to write the fraction in its simplest form. So here some figures are given and we have to make them in simplest form. Okay, so here 6 by 16 is given and we divide both the numerator and denominator by 2. So it will become 2 3 is 6 and 2 is 16. So what we will get? 3 by 8. So here in this picture we can check also. Here are 8 parts and 3 parts are shaded. It means we can say 3 by 8 is the simplest form of 6 by 16. Now this one also 3 3 is a 9 and 3 4 is 12. 4 parts are given and 3 parts are shaded. So we can write it 3 by 4. Here 5 1 is a 5 and 5 2 is a 10. So 1 by 2 is here. So 1 by 2 is here. 2 parts is given and 1 is shaded. So we will write it 1 by 2. And we can say 1 by 2 is the simplest form of 5 by 10. Now we can solve some example also. So here example is given, reduce to the lowest term. So some fractions are given and we have to reduce in lowest terms or simplest form. So first one is 24 by 38. So it is given 24 by 38. So first we will divide the common factor divided by common factor. So here 24 by 38 divided by 2. So what will we get? 12 2 is 24, here 12 and 3 2 is 2 and 2 9 is 18. Here we get 19. So what will the answer? What will be the answer? 12 by 19. That is our simplest form of this fraction. Okay. Next one is 9 by 36. Now we will divide it by the common factor, that is 3. 3 3 is 9 and 3 1 is 3, 3 2 is 6. What we will get? 12. Now again we have common factor of 3 and 12, that is 3. Here we will divide it. 3 1 is 3 and 3 4 is 12. Now we have only one common factor, so it is our lowest term, 9 by 36. Okay. नेक्स्ट वन इज 16 by 24. 16 by 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. अब जो उसका कॉमन फ्रैक्शन है 2 8 is 16 and 12 is 24. Here 2 4 is 8. Again we will divide it by 2. 2 6 is 12. Again we can divide it by 2. 2 2 is 4 and 2 3 is 6. So what we will get? We get 2 by 3 and we can say that 2 by 3 is the simplest form of 16 by 24. Okay. Now on the basis of this, we will solve our exercise 7.3. Okay. So first question is given here. Identify the fractions that are in their simplest form. So here we have to find out the fractions that are in
simplest form. So how do we find it? So here, first one is given as 10 by 9. So 10 by 9, we will find 10 by 9 in lowest form or not. So how we will find? So 10 by 9, first we find out the factors of both numerator and denominator. So what are the factors of 10? So factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. Okay, and now we will find the factors of 9. So factors of 9 are 1, 3 and 9. Okay, now we have to find out common factors. So here common factors are, what are the common factors? 1 only. Okay, and as we know, when common factor of both the numerator and denominator we get 1, it means the given fraction is in simplest form. कि हमें पता है कि जब हम दोनों के फ्रैक्शन न्यूमरेटर के और डेनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालते हैं और उन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है, 1 के अलावा कुछ नहीं, इट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन फ्रैक्शन इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म की जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है. सो वी कैन से yes 10 by 9 is in its simplest form. Now I can solve one more questions for you. So here 18 by 20 is given. So we will find factors of 18. Factors of 18. And what are the factors of 18? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Similarly, factors of 20. Factors of 20 are 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Okay, these are the factors of 18 and these are the factors of 20. Now we will find what? Common factors of both the numbers. So here 1, 2 and so common factors are, here common factors are 1 and 2. It means two factors are there. So we can say that the given fraction, that is 18 by 20, is not in its simplest form because here common factor is not only 1, here 2 also. Okay, so common factor यहाँ 1 और 2 दोनों हैं, 1 नहीं है सिर्फ. अगर कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा तब हम कह सकते हैं कि जो हमें फ्रैक्शन दिया है वो लोएस्ट टर्म में है. अगर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, वो अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है. ठीक है. Now rest of the parts you will solve by yourself, okay, on the basis of this understanding. Okay, now move to the next question, that is reduce to the lowest term. Now we have to reduce it by lowest term. And how do we reduce? By dividing both numerator and denominator with the same number. So here we have 50 by 70. First one is 50 by 70. This fraction is given, and how do we find its simplest form? So here 50 upon 70 we can divide it by its common factor, that is 10. 10 5 is 50 and 10 7 is 70. So what will we get? We get 5 by 7. It means we can say that 5 by 7 is the lowest term of 50 by 70. Okay, I have solved one for you and you have to solve rest of the parts. Okay, now we'll move to our next topic, that is like fractions and unlike fractions. So let's learn about it. So what is like and unlike fractions? Look at the fractions. Some fractions are given and we have to look at it. Okay, here 4 parts are given, 1 is shaded, so fraction will become 1 by 4. Here 4 parts are given and 2 parts are shaded. Fraction will become 2 by 4. And here same, 4 parts are given and 3 are shaded, so fraction is 3 by 4. Here fraction is 4 by 4. 4 parts are given, total parts are 4 and shaded part also 4. So these are like fractions as they have the same denominator. Okay, so we can say that fractions have same denominator. It means these are like fractions. Okay, so here 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4 and 4 by 4. 4 fractions are given and all the fractions have denominator 4.
and 4 is the same in all the fractions. So जब भी denominator same होगा जिन भी fraction का, वो क्या होंगे, like fractions होंगे. तो we can say 1/4, 2/4, 3/4 and 4/4 are like fractions. Okay. Fraction with the same denominator are called like fraction. We can say that fraction with the same denominator are called like fraction. कि ऐसे fraction जिनके denominator क्या होंगे, same होंगे, वो क्या होंगे हमारे like fraction. Some fraction also given here. Look at the fractions. Here 4 parts are given here and 1 is shaded, so fraction will become 1/4. Here 2 parts are given and fraction will become 1/2. Here fraction 1/3. Now observe all the fractions and what we will get? We get the denominator of the given fractions are different. Here 4, 2 and here 3. So जो भी हमें fraction दिया है उसमें denominator क्या है, अलग अलग है. So these are unlike fractions as they different denominator. क्योंकि इनके different denominator है, अलग अलग है. यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है. It means ये क्या होंगे, unlike fractions होंगे. So we can say that fraction with different denominator are called unlike fractions. So fraction with same denominator are like fractions and fraction with different denominator are unlike fraction. कि अगर denominator same होगा तो वो हमारे होंगे like fraction, अगर denominator अलग अलग होगा तो वो हमारे होंगे unlike fractions. Now we will learn what is proper and improper fractions. Okay, so let's learn about it. Look at the fractions here. 3 parts are given and 1 is shaded, so fraction will become 1/3. In this 8 parts are given and 5 parts are shaded, so fraction will become 5/8. So we can say fractions which are less than 1 whole are called proper fraction. जो भी फ्रैक्शन क्या होते हैं पूरे होल से कम होते हैं वो क्या होते हैं हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन. हियर 3 पार्ट्स आर गिवन और हमें पता है 3 पार्ट्स को होल बनाने के लिए 3 पार्ट्स चाहिए, लेकिन हमने क्या लिया है 1/3. 3 में से 1 पार्ट लिया है तो वो क्या है पूरे होल से कम है. So हम कह सकते हैं it is proper fraction. In a proper fraction the numerator is smaller than the denominator. Or easy way to understand that denominator is always greater than the numerator. Means we can say that numerator क्या होगा छोटा होगा और denominator उससे बड़ा होगा. Here 4/6. So here numerator हमारा denominator से छोटा है तो it means it is proper fraction. Okay, one more example. 5/7. So it is also a proper fraction because 7 is greater than 5. Means denominator बड़ा है और numerator छोटा है. तो ऐसे वाले जो fractions होते हैं वो क्या होते हैं हमारे proper fractions. For example, 1/4, 5/9 and 7/12 just like that are called proper fractions. Okay. Proper fraction with numerator 1 are called unit fraction. अब इसमें भी एक अलग, अगर proper fraction में जो numerator होगा अगर वो 1 आ रहा है जैसे 1/2, 1/5, 1/7, 1/9, so these fractions are called unit fraction. Okay, like 1/3, 1/4, 1/6 and 1/7 are unit fraction. ये क्या है unit fractions है. Okay. So I hope proper fractions and unit fractions has clear to you. Now look at the fractions. Some more fractions are given here. We can see that 2 figures are given. So 2 and 3 parts are shaded. That will become 3/2. Here we have 4 parts in each. Okay, and now we have 9 parts shaded. Fraction which are more than 1 whole number are called improper fraction. So ऐसे fraction जो क्या है 1 whole से भी ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे ये पूरा 1 whole हो गया, इससे ज़्यादा भी है. It means ये क्या है improper fraction. यहाँ पर भी 3 फिगर दिए हैं, ये पूरा होल बना रही है, फिर एक और होल बनाया, फिर एक और पार्ट एक्स्ट्रा है. मतलब जो हमारा होल था उससे भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं. तो ये हो गया 9/4. तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं improper fraction. और we can say that in an improper fraction the numerator is greater than the denominator. यहाँ पर क्या होगा numerator ज़्यादा होगा और denominator कम.
तो जब न्यूमरेटर कम हो, डेनोमिनेटर ज्यादा हो, तो वो होता है प्रॉपर। एंड अगर न्यूमरेटर बड़ा है किससे, डेनोमिनेटर से, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर। ओके, सो these are proper and improper. For example, 3 by 2, 9 by 4, 5 by 3 are improper fraction because here numerator is greater than denominator. यहाँ पर जो numerator दिया हुआ है हमें वो क्या है, denominator से बड़ा है. Okay, now improper fractions can be written as mixed fraction. Improper fraction को हम mixed fraction में भी लिख सकते हैं. अब mixed fraction क्या होता है देख लेते हैं. Here 3 by 2, 3 parts are shaded. Here we can write one whole. So one whole is there and 2 parts are given and one is shaded. So it will become one whole plus 1 by 2. Okay. Here also 2 whole are there. So we can write here 2 whole and 1/4. 1/4. So 2 wholes plus 1 by 4. So in this way we can write are mixed fractions. Now we will learn how to convert improper fractions to mixed fractions. Let's learn. Conversion of an improper fractions to mixed fraction. अब improper fraction हमें दिया हुआ है, उसको हम mixed fraction में कैसे change करेंगे, चलिए देखते हैं. So first example is given here. Convert the improper fraction 8 by 5 to mixed fraction. अब 8 by 5 को हमें किस में change करना है, mixed fraction में. So here 8 by 5 is given. That is our improper fraction. So how do we convert it? First, we have to divide 8 by 5. Means we will divide given numerator by the denominator. Okay. So here 5 is our denominator, 8 is our numerator. Okay. Now we will divide the numerator by the denominator. अब हम numerator को क्या करेंगे, denominator से divide करेंगे. We get 1 whole and remainder 3. How do we write? 5 1 is 5. Now minus करेंगे तो will we get 3. 3 क्या है हमारा, 3 है हमारा remainder and 1 is quotient. तो quotient को हम बोलेंगे whole number. ठीक है. और जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा न्यू न्यूमरेटर बन जाएगा. तो हाउ डू वी राइट इट? सो 1 होल, ये हो गया हमारा क्या, होल नंबर को ऐसे लिखेंगे. उसके बाद नया न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर बचा है. तो ये हो गया हमारा न्यूमरेटर एंड व्हाट विल आवर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर जो था वही रहेगा, दैट इज 1 होल 3 by 5. सो जस्ट लाइक दैट वी कैन राइट or we can convert improper fractions to the mixed fraction. Okay. Next example also given here. Change the improper fraction 14 by 3 to a mixed fraction. So how do we convert it? We know that we have to divide numerator by the denominator. So here 3 is our denominator and 14 is our numerator. 3 4 is 12 and we get 2. 2 is our remainder, that will become our new numerator, and 4 is our quotient, that will become our whole number. So we can write whole number, that is 4, and our new numerator is 2 and denominator is the same, that is 3. So 14 by 3 written as mixed fraction is 4 whole 2 by 3. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 whole 2 by 3. And we also remember that when the numerator is equal to the denominator, the fraction represents one whole. कि जब क्या होगा, numerator and denominator same होंगे, means 4 upon 4. So numerator भी same है, numerator and denominator same है, that is 4. So सब जब हम इसको करते हैं 4 1 जा 4, तो जब भी numerator and denominator same होगा तो वो किसको दिखाएगा, one whole को, एक पूरे को दिखाएगा. When the numerator is a multiple of the denominator, the fraction represent a whole number. या फिर उसका जो न्यूमरेटर होगा डेनोमिनेटर का क्या होगा, मल्टीपल. जैसे मैंने लिखा 4 by 2. Here also 2 1 is 2, 2 2 is 4. So it is representing 2 wholes. Okay. तो जब भी हम क्या करेंगे, सेम नंबर सेम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दिया है, इट मीन्स वो एक 1 होल को दिखा रहा है, या फिर जो डेनोमिनेटर जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डेनोमिनेटर के मल्टीपल्स है. ओके. Now
Now we will learn how to change or convert mixed fraction into improper fraction. अभी हमने देखा कि improper fraction को हम mix में कैसे change करेंगे, ठीक है. अब हम देखेंगे mix को हम improper में कैसे change करते हैं. तो here example number 3, convert the mixed fraction 4 whole 1 by 2 and improper fraction. So 4 whole 1 by 2 को हमें क्या करना है, improper fraction में चेंज करना है. तो कैसे करेंगे, पहले जो हमें होल नंबर है उसको हम डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 into 2, एंड जो हमारा न्यू न्यूमरेटर है मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है उसको हम ऐड करेंगे, और जो डेनोमिनेटर है वो सेम रहता है तो वो अपॉन में डेनोमिनेटर 2 था वो 2 ही रहेगा, ठीक है. हियर 4 2 is 8 and plus 1 upon 2, 8 1 9 upon 2. So after converting mixed fraction of 4 whole 1 by 2, we will get improper fraction, that is 9 by 2. Okay. Now we have exercise on the basis what we have learned, and what we have learned, we learn about proper fraction, improper fraction and mixed fraction, and how to convert mixed fraction to improper fraction, and how to convert improper fraction to mixed fraction. Let's solve our exercise, that is 7.4. Circle like fractions. And what are the like fractions? Like fractions कौन से होते हैं, जिनके denominator same होंगे. So here 7 7 7 7, it means 2 by 7, 4 by 7, 6 by 7, 11 by 7 and 3 by 7 are like fraction. And why they are like? Because they have same denominator. Okay. Now move to the next question, that is classify the fraction as improper fraction. And what is improper fraction? Improper fraction कौन से होते हैं, जिसका numerator बड़ा होगा और denominator छोटा होगा, ठीक है. So let's find. Here numerator is smaller than denominator, it is not improper fraction. Now this one, here numerator is greater than denominator, it means it is improper fraction. तो जिसका numerator बड़ा होगा वो क्या होगा हमारा, improper fraction. Denominator से ज्यादा होगा numerator. Here we can write this is not an improper fraction. Okay. So just like that you have to write all the rest of the parts by yourself. Now we will move to the next question, that is change improper fraction to mixed fraction. अब improper fraction को हम mixed fraction में हमें change करना है, और हम change करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे numerator को denominator से divide. Okay, so let's solve it. Here first one is given 11 by 5. We have to divide numerator by denominator. Okay, so 5 11, it is our denominator, it is our numerator. So here 5 to the 10, what we will get, 1. So 1 is our remainder, and we know that remainder will become our new numerator. Okay, and 2 is our quotient, that will become our whole number. Yes, so here we can write 11 by 5 as a mixed fraction. In that way 2 is a whole, 2 whole, our new numerator is 1 upon, and denominator will be same. So we can write 11 by 5 equals to 2 whole 1 by 5. So it is in the form of improper, it is in the form of mixed fraction. Okay. So just like that, rest of the part you will do by yourself. Now move to the next question, that is change mixed fraction into improper fraction. And how do we change mixed fraction to improper fraction? Let's solve. Here 1 whole 1 by 3. 1 whole 1 by 3 is given, and we know that first we have to multiply our whole number to denominator. So 1 into 3, and then add our new numerator 1, and denominator will be the same. So 1 3 is a 3 and 1 4 upon denominator will be the same, that is 4 by 3. It means we can write 1 whole 1 by 3 written as
written as 4 by 3. It is in mixed fraction, it is in improper fraction. So in this way you can solve all the question by yourself. Okay, now we will move to the next topic, that is comparison and ordering of fractions. ओके यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारे फ्रैक्शन है उनको ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं या फिर उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ओके सो कन्वर्जन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. अब हम लाइक फ्रैक्शन देखते हैं फर्स्ट. सो एग्जांपल विच इज ग्रेटर 5/7 और 3/7. अब हम बताना है 5/7 बड़ा है या 3/7 बड़ा है. सो हियर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इज गिवन. 7 are the whole parts and 5 is shaded. Here also 7 whole parts are there and 3 is shaded. So by picture we can see that this one is greater than this one. Okay, so from the figure it is clear that 5/7 greater than 3/7, or we can say that 3/7 is less than 5/7. Okay, to compare like fraction we compare their numerator. तो जब भी हम like fractions को compare कर रहे हैं तो हमें किसे compare करना पड़ेगा, उनके numerator को, because denominator तो same होता है. ठीक है, so here denominator same है, numerator 5 and 3. तो 5 बड़ा है 3 से, it means 5/7 जो हमारा fraction है वो बड़ा होगा. Next, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर. अब हमें पता है अनलाइक फ्रैक्शंस भी होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे. ठीक है, डिफरेंट होंगे. सो और इसमें हम क्या देखेंगे, इनके न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है. ऐसे अनलाइक फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं. तो विच इज ग्रेटर 4/7 और 4/9. यहाँ पे हमें बताना है 4/7 बड़ा है या 4/9. सो compare unlike fraction with same numerator, we compare their denominator. जैसे हमने अभी like fraction में क्या देखा था कि इनके जो denominator है वो सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करके पता लगाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा है. ठीक है, इन दिस अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो तब हम क्या करते हैं उनके डेनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर 9 is greater than here 9 and 7 and 9 is greater than 7, means we can say that 4/9 is less than 4/7, क्योंकि 9 पार्ट्स में से 4 है और यहाँ पर 7 पार्ट्स में से 4 लिया है, तो ज्यादा कौन सा होगा, ये वाला. तो यहाँ पर जब हम डेनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं तो जो बड़ा वाला डेनोमिनेटर जिसका होगा वो क्या होगा, छोटा वाला नंबर होगा. जैसे 4/9 बड़ा ना होकर क्या होगा 4/7, क्योंकि वो 7 पार्ट्स में से 4 है और यहाँ पर 9 पार्ट्स में से 4. ठीक है, नाउ ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन की ऑर्डरिंग कैसे करते हैं हम. एग्जाम्पल नंबर 3, अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. So what are the fraction here? 7/13, 7/21, 7/10, 7/34 and 7/15, and it is showing that these are the unlike fractions but have same numerator. Okay, so here the numerator of all the given fraction are the same as the fraction with smaller denominator is greater. जैसे कि हमने अभी देखा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो स्मॉलर डेनोमिनेटर होगा, जो सब छोटा डेनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर होगा. सो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में. किसके डिसेंडिंग ऑर्डर के, डेनोमिनेटर का डिसेंडिंग ऑर्डर. अगर हमें इसे असेंडिंग में अरेंज करना है क्योंकि जो सबसे बड़ा डेनोमिनेटर होगा वो किसको दिखा रहा होगा, छोटे नंबर को. सो हियर 7/34 लेस देन 7/21 एंड उससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास 7/15, उसके बाद 7/13, देन 7/10. So we arrange it in ascending order, or if we won't arrange it in descending order, so how do we arrange? Here 7/10 is the greatest fraction, then 7/13, after that 7/15, now 7/21 and 7/34. Okay, so this is in descending form. Okay, it is in descending form. So now we will solve our exercise 7.5.
Okay student, on the basis of this understanding we will solve our exercise 7.5. So what is the first question is, circle the smallest fraction in each of the group. So we have to find out smallest fraction. Okay, here 2 by 5, 4 by 5, 1 by 5. We know that these are like fractions, and in like fraction we compare numerators. So here 1 is smaller than all of the number. 1 is smallest. So we can circle here 1 by 5, that is smallest fraction. Okay, these are unlike fraction having same numerator. We know that जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो किसको दिखा रहा होगा, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज शोइंग स्मॉलर नंबर. ओके, सो यहाँ पर हमारा स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, 1/10. ओके, नाउ just like that rest of the example you will do by yourself. Next, also compare and put greater than, less than or equal sign. We have to put in the box these signs. Here 5, 5. Denominator is same, means like fractions are there, and we will compare the numerator. Here 3 is greater than 2, it means 3 by 5 is greater than 2 by 5. Here we have different denominator, it means these are unlike fraction but with the same numerator. हमें पता है greater denominator is showing smaller number. So here 7 by 7 is less than 7 by 5. Okay. So just like that you will solve rest of the part of these questions. Now arrange in ascending order. So how do we arrange in ascending order? Let's do. Here 3 by 2, 2 by 4, 5 by 4 and 1 by 4. And we know that if denominator are same, it means these are like fractions. So how do we compare it? We will compare its numerator. So we have to arrange it in ascending order. So we will write ascending order of these fractions equals to, here 1 by 4, then 2 by 4, after that 3 by 4 and then 5 by 4. So it will become in ascending order. Okay. Just like that you will solve rest of the part of this question. Now we have to arrange in descending order. So how do we arrange in descending order? Here 9, 9, 9, 9 denominator are same, means all the fraction are in like fraction. So how do we solve? Here we have to arrange in descending order. First मतलब हमें क्या लेना है, पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है, दैट इज हम इसमें न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे. तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 6. So we will write in descending order 6 by 9, then 4 by 9, after that 3 by 9 and 2 by 9. So we arrange it in this manner in descending order. Okay, so two parts are more you have to do by yourself. So now we will learn adding and subtracting like fraction. Like fraction आप सबको पता है, denominator जिसका same हो. So denominator same हो मतलब like fraction जो हमारे होंगे उनको add और subtract कैसे करेंगे. Adding like fractions. So add कैसे करेंगे, to add the fractions. To add like fractions. So here add the numerator, हम क्या करेंगे, numerator को add करेंगे. The denominator remains the same, denominator same ही रहेगा, बस हम किसको ऐड करेंगे, जैसे हम कंपेयर बस न्यूमरेटर को करते हैं, ऐसे ही जब हमें ऐड करना है तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा और हम किसको ऐड करेंगे, उनके न्यूमरेटर्स को. जैसे यहाँ दिया है हमें 2 by 8 plus 2 by 8. So denominator will be the same 8 and numerator will be the add. 2 plus 2 will become 4. So here 4 by 8 is our answer. Similarly 1 by 3 plus 1 by 3, so denominator will be the same and 1 plus 1 will become 2. Okay, now we will solve some examples of it. Example number 1. Add 3 by 8 and 2 by 8. As we know 3 by 8 and 2 by 8 are like fractions. और like fractions को जब हम ऐड कर रहे हैं हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे. तो 3 plus 2 कितना हो गया, 5.
और डेनोमिनेटर सेम रहेगा, तो इनका सम करने पे हमारे पास क्या आएगा 5/8। 3/8 प्लस 2/8, 3 और 2 को हमने ऐड किया तो हो गया 5 और डेनोमिनेटर सेम, so our answer will be 5/8. Here add 1 whole 1/6 and 2 whole 1/6. Okay, so here as we know 1 and 2 are wholes, so 1 और 2 whole number को पहले हम प्लस करेंगे तो 1 और 2 कितने हो गए, होल नंबर हो गए हमारे पास 3. Here 1/6 and 1/6 that is like fraction, तो डिनोमिनेटर वही रहेगा और न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1, सो ये हो जाएगा हमारा 3 whole 2/6 equals to we can write 3 whole 1/3 equals to 3 whole 1/3 because 2 1s are 2, 2 3s are 6, so we can write it 3 whole 1/3. Okay, let's do some questions here. Look at the figure to find the sum. अब हमें सम निकालना है, किसको देखते हुए, फिगर को देखते हुए. There are 8 parts and 8 parts, so 3 शेडेड पार्ट एंड 2 शेडेड पार्ट्स लिए हैं, तो फिगर के थ्रू हमें बताना है कि इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा. डेनोमिनेटर हमें पता है सेम ही रहेगा क्योंकि पार्ट्स उतने ही हैं. इनको हम मिला रहे हैं 3 और 2, तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5/8. ठीक है, और इसको भी ऐड करेंगे हम तो 3 और 2 कितना आएगा 5. ऐसे ये 3 पार्ट्स है 1/3 और 1/3, 1 और 1 को हमने ऐड कर दिया और ये 3 ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा 2/3. 2 parts are shaded and 3 are given total parts. Here also 3/4. 4 parts are total parts and 3 are shaded part. Now we will learn subtracting like fractions. So अब subtract कैसे करेंगे, तो subtract the numerator, denominator will be the same. As we know, like fraction has same denominator, so numerator we will compare our numerator. So numerator को ही अगर हमें subtract करना है तो हम क्या करेंगे, numerator को subtract करेंगे. So here 3/7 minus 1/7, denominator will be same, that is 7, and 3 minus 1 will become 2. So our fraction will become 2/7. Here also 4/5 minus 1/5, 4 में से 1 गया 3 और 5 का 5 ही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा. Let's solve some example of it. Subtract 3 whole 3/4 from 4 whole 1/4. So how do we solve it? तो 4 whole 1/4 इसमें से हमें माइनस करना है 3 whole 3/4. हमें पता है इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम होल में से होल को माइनस कर दें. ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 और 3 आ रहा है तो नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं. तो कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 से 16 और 1 जो हमारा न्यू न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देंगे 17 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा. Here also 3 whole 3/4, तो 3 4 से 12 and 3 15 और 4 हमारा डिनोमिनेटर that is 15/4. Now we will subtract it. 17/4 minus 15/4. So यहाँ पर ये like fraction है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. तो न्यूमरेटर को हम माइनस करेंगे 17 minus 15 that will become 2/4 और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता है आप सबको. अब हमारा आंसर है 2/4, लेकिन अगर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसको सेम नंबर से डिवाइड करके उसके फैक्टर जो होंगे, तो 2 1 से 2 and 2 2 से 4, सो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी 1/2. Here also subtract 1/3 from 1 whole 2/3. So here we first change mixed fraction into improper fraction. So 1 whole 2/3, 1 3 is 3 plus 2 5 and denominator will be the same. It means now we will subtract 1/3 from 5/3. अब इसको माइनस करेंगे तो 3, डिनोमिनेटर सेम है, 5 में से 1 को माइनस किया कितना आ गया 4/3 और 4/3 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप सबको पता है कैसे चेंज करके लिखते हैं, 3 को 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और यहाँ पर आ गया रिमाइंडर. सो क्वोशिएंट विल बी आर न्यू होल नंबर and remainder will be our new remainder and denominator will be the same. So here we can write 1 whole 1/3. So
These are some way how do we add or subtract like fractions. Okay, now we will solve our exercise on the basis of our understanding. Here find the sum. We have to find out sum. So 3 by 6 and 2 by 6. So how do we find it? Then denominator will be the same and we have to add numerator. So 3 plus 2. We will add 3 plus 2 is 5 and denominator will be same. So the answer will be 5 by 6. So just like that you can solve all the rest of the part of this question by yourself. Okay. Now find the difference. Now we have to find out the difference, means we have to subtract the given number, given fractions. Here 5 by 9 minus 1 by 9. So 9 will be the same. Denominator we will subtract what? Numerator. So here 5 minus 1 is 4 and denominator will be the same. So what we will get? 4 by 9. Just like that rest of the parts you will solve by yourself. Okay. Now we will learn word problems. How do we solve our word problems? Okay. So example number 1 is here. Nitin spent 6 by 8 of his pocket money on books and 1 by 8 on chocolates. What part of the pocket money did he spend in all? तो नितिन को जो पॉकेट मनी मिलती है उसका 6 by 8 पार्ट उसने क्या किया है? बुक्स पे खर्च कर दिया है. ठीक है. और बाकी का 1 by 8 पार्ट उसने किस पे खर्च किया? चॉकलेट्स पे. ठीक है. तो हमें बताना है उसने अपनी पॉकेट मनी का टोटल कितना पार्ट खर्च किया है. सो आंसर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल बताना है तो मीन्स हमें ऐड करना है. सो 6 by 8 एंड 1 by 8 को हम ऐड करेंगे. 6 by 8 प्लस 1 by 8 हमें पता है डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस है, और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 by 8. Hence we can say that Nitin spent 7 by 8 of his pocket money. Okay, now we will solve example number 2. Here Rashmi ate 2/3 of a pizza and Sarika ate 1/3 of the pizza. Who ate more pizza and by how much? So here रश्मि क्या करती है? पिज्जा का 2/3 पार्ट खा लेती है और सारिका 1/3 पार्ट खाती है. तो हमें बताना है किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया, ये भी फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स. पिज्जा ईटन बाय रश्मि इज 2 by 3. Means we can say that 2/3 part of the pizza. Here pizza eaten by Sarika is 1/3. To compare 2 by 3 and 1 by 3 we find these are like fractions. और हमने अभी कंपेयर करना सीखा है जिससे हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन छोटा फ्रैक्शन है. और ये क्या है? दोनों लाइक फ्रैक्शन है. तो लाइक फ्रैक्शन होने पे हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. यहाँ पर 2 बड़ा है 1 से. इट मीन्स 2 by 3 is greater than 1 by 3. So we can say रश्मि ate more. अब कितना ज्यादा खाया उसने वो देखते हैं. 2 by 3 में से हम 1 by 3 माइनस करेंगे. अगेन दीज आर लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन है तो हम किसको कंपेयर करेंगे? इनकी न्यूमरेटर को. न्यूमरेटर को हमें क्या करना है? अब माइनस. तो 2 में से 1 गया 1. इट मीन रश्मि एट 1/3 ऑफ द पिज्जा मोर देन सारिका. रश्मि ने क्या किया है? 1/3 ऑफ द पिज्जा, पिज्जा का 1/3 पार्ट सारिका से ज्यादा खाया है. ठीक है. तो ये थे हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ वी विल सोल्व आवर एक्सरसाइज 7.7 दैट on the basis of word problem. First question is given here. Naveen bought 1 whole 1 by 5 kg of sugar and 4 by 5 kg of rice from the market. What was the total weight of the both? यहाँ पर हमें total weight निकालना है तो हमें क्या करेंगे? Add करेंगे. So first we write here Naveen bought sugar. कितने सुगर खरीदी है उसने? 1 whole 1 by 5. And we will change it into the improper fraction. How do we change? 1 5 is 5 and उसमें फिर 1 ऐड करेंगे. कितना हो गया? 6 और denominator will be the same. It means 6 by 5. Here he bought rice. तो कितने राइस खरीदे हैं उसने? 4 by 5 kg. ठीक है. तो इतनी उसने शुगर खरीदी है 6 by 5 kg और 4 by 5 kg उसने राइस खरीदे हैं. अब हमें क्या निकालना है? इसका टोटल.
अब टोटल कैसे निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे टोटल वेट ऑफ बोथ राइस एंड शुगर। तो हम क्या लिखेंगे 6/5 प्लस 4/5, and by observing these fraction we can say that it has same denominator, it means both the fraction are like fractions. So like fraction के लिए हमें क्या करना होता है, denominator same रहेगा और numerator को add कर देंगे। 6 और 4 कितना आ गया 10। So we can say that what the total weight of both sugar and rice is 10/5 kg. Okay, kg means kilogram. So just like that you can solve these all the questions. You have to minus, means you have to subtract or add. Here Mohan mowed 1/3 of his lawn on Monday and 1/3 of it on Tuesday. What fraction of the lawn did he now on this 2 days? तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, दोनों डे का बताना है। यहाँ पर Mihir had a rope 1/5 meter long, Chaya had a rope 4/5 meter long. If both the ropes are joined, what will be the length of both the ropes? अब यहाँ पर फिर से दोनों ropes की लेंथ बतानी है। It means हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आगे Amir ate 2/4 of a chocolate and Shahrukh ate 1/4 of the chocolate. How much chocolate did they eat together? अब यहाँ पे पूछा eat together, it means दोनों ने साथ में कितनी खाई है, तो हम ऐड करेंगे। Mrs. Agarwal bought 3/5 kg of rice. She cooked 1/5 kg of it. How much rice was left? यहाँ पर पूछा कितने बचे, तो हम वो कैसे बता सकते हैं, जो हमें टोटल दिया है उसमें से उसने जितना यूज किया है, कुक किया है, उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा अब कितने राइस बचे हैं। नेक्स्ट, Sheena ate 3/4 of the cake while Preeti ate 1/4 of the cake. Who ate more cake and by how much? ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने एग्जांपल में किया था। इन्होंने क्या किया, शीना ने खाया 3/4 और प्रीति ने खाया 1/4, और हमें बताना है किसने ज्यादा खाया, तो पहले हम कंपेयर करेंगे, देन कितना ज्यादा खाया उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। Okay, now Sadhna had 2 whole 2/5 meter ribbon. She cut a piece 1 whole 3/5 meter long. How much ribbon was left? अब हमें बताना कितना रिबन बचा, और जब हमें लेफ्ट पार्ट बताना होता है तो हम क्या करेंगे, माइनस टोटल पार्ट्स में से जितना यूज किया वो माइनस कर देंगे। नाउ वी विल मूव टू द horse क्वेश्चन. So these are some word problems you will solve by yourself. Okay. Now horse question, the fraction equivalent to 1/6. 1/6 के इक्वल क्या हो सकता है, अब हमें क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको 2 से किया तो ये हो गया 2 1 2, 6 2 12, here 2 is 12 is this, means C option is correct. Which one of the following is greatest, कौन सा बड़ा है? So here all the denominator is 9, it means these all are like fractions. अब हमें बताना है ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर में सबसे बड़ा है 7, इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड। अगर न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा, तो वो कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हमने पढ़ा था। यहाँ पर हमें ऐड करना है, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर सेम आएगा, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 2 और 3 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5/7। नेक्स्ट, माइनस करना है, 5 है तो ये क्या हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। माइनस करना है तो हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, 4 में से 1 गया 3, और आंसर विल बी बी ऑप्शन, दैट इज 3/5। So here student, maths lab activity has been given, so you will do this activity with your teacher in your class. So it is all about our chapter number 7, that is fraction. I hope all the concept of this chapter has been clear to you all. Keep on doing practice, it will make you perfect. We'll meet in the next class. Meanwhile, take care, goodbye.